अब नेपाली हिंदी र इंग्लिश तीनटेमा कोशिश गर्छु है भाषाको लागि एम्बेसडर आई थिंक इट्स फाइन फर यू या ओके सो इट्स सबभन्दा पहिले म राजु साहबसँग एउटा कुरो जान्न खोजेँ कि what led you that what I found that wherever you were posted in Vietnam and Nepal and some of the very international places, I find it that you have been a personal attachment towards the place. And we have been coming, writing, talking about the people, language, culture, politics, international relations, and all. What led it to be that I have seen a lot of ambassadors, a lot of diplomat, but such a affection to Nepal, what it is actually, can you tell me a little bit about it? Well, thank you very much. And I was thinking maybe people can move up a little bit because I can hardly see anyone. So it'll be nice. आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा. It'll be a more intimate gathering. Before I have just asked the question to Ambassador. Why एकदमै seasoned diplomat. 30 years he worked with the Indian Foreign Service. He was worked with the United Nations in Hungary. He was an ambassador to Hungary, ambassador to Vietnam, and then he has been a crucial watch and our peace process, which was a very crucial political milestone in these countries. And he was at the time as a joint secretary in the Ministry of Foreign Affairs with the 12-point and many peace process events. So he has been a good knowledge about the Nepal's recent and modern political development. So, Ambassador, please. As a diplomat, I think to be effective, you must really immerse yourself in that country. One of the joys of being a diplomat is traveling to foreign countries, learning about different cultures. You have to be curious. आपको एक मन में फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है. ये हमारे कल्चर से फर्क कल्चर है, तो कुछ नयापन है. If you are curious, you are interested in learning something different, then it's very enjoyable. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं अरे इस कंट्री में तो बड़ी ये गरीबी है, कहाँ हम आ गए, very difficult, we should really, I want to go to Europe. So एक वो एटीट्यूड भी हो सकता है, बट अगर आप एक उसको नए नजर से देखें कि ये हमारा देश ऐसा है और ये देश बिल्कुल फर्क है, इनका रीत रिवाज, रहना सहना, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, फूड, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू इमर्स योरसेल्फ इन अनदर कल्चर. तो कितना सीखने को मिलेगा. तो अगर इस व्यू से आप जाएं कहीं, जैसे वियतनाम का कल्चर बिल्कुल फर्क है इंडिया से, but such a fascinating country. नेपाल on the other hand का कल्चर भारतीय संस्कृति और सभ्यता से मिलता जुलता है, बट नेपाल में कितनी डाइवर्सिटी है और नेपाल का जो इंडिया के साथ रिश्ता है वो इतना बहुआयामिक है. It is so multifaceted. So it's fascinating to study the different strands, different aspects of the relationship and to see how you can contribute. So जो आपका सवाल जो है, तो मुझे लगता है कि you have to immerse yourself in the culture of the country that you are in order to be effective. You have to understand the manner in which the other person thinks. So I think that is a essential attribute. बहुत जरूरी है to be successful, as a foreigner in a country, because it's not necessarily easy being a foreigner in a country. So I think that is what I would say. Yeah, thank you, Ambassador. मुझे एक बात, आपकी किताबों को मैंने फिर से पढ़ा. इस असाइनमेंट के बाद में मैंने पहले भी पढ़ा था इस किताब को. मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने नेपाल के ऐतिहासिक राष्ट्रवाद से लेकर के 1950 से अभी तक का बहुत सारा अप्स एंड डाउन, इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय का बहुत सारी बातें आपकी किताब में है. तो आप जिस समय में नेपाल में राजदूत थे, उस समय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट with peace process as well as the constitution making. So
how you feel at the time? I have seen that some of the things which have been very यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई थी जब फॉरेन मिनिस्टर जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं then foreign secretary Jaishankar visited here. So it has a little bit controversy, and people say that in a negative way. What led actually? What actually it is? Can you tell me a little? So the first thing I want to say is that I have a very long association with Nepal. मैं कम से कम 20-25 साल से नेपाल से जुड़ा हुआ हूँ. Either in an official capacity या unofficially, जैसे मैं जब पीस कीपिंग मिशन में था यूरोप में, तो तब भी वहाँ पे हमारे नेपाली दोस्त वगैरह काफी थे. So in many ways I've been connected, and I feel very how shall I say, I really enjoy the challenge of this relationship and the challenge to improve it. And the other aspect जो मुझे लगता है कि नेपाल में हिस्टोरिकली आप देखें 6-7 दशकों में कितना रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है. आप नेपाल का सिस्टम देखिए, नेपाल की पॉलिटिक्स देखिए, सो मेनी चेंजेस. आई डोंट थिंक देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया में चेंज आया जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, बट नेपाल में तो आप 50s देखिए, लेट 80s 90s देखिए, फिर 2000s देखिए, फिर 2015 नया संविधान. सो देयर हैव बीन सच सेमिनल मोमेंट्स इन नेपाल्स हिस्ट्री. और मुझे लगता है कि जब हम किसी एक मोमेंट से देखते हैं तो यू फील ओवरवेल्म्ड, पर अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखिए तो द change is the trend is positive. There is progressive change constantly. So I think that is one thing that, as a outsider, I can appreciate. Maybe within Nepal, people don't appreciate the significance of the changes that have happened in your society. So that is one very, very important moment. We can go into the details of what happened during the peace process, what happened during the constitutional drafting. उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुए. मैंने अपनी किताब जो काठमांडू डिलेमा लिखी है, एक उसका कारण लिखने का ये भी था कि मैं नेपाल की जनता को बताऊं कि भारत की क्या सोच थी उस वक्त और भारत की क्या पॉलिसी थी, क्या स्ट्रैटेजी थी. क्योंकि कोई भी जो इवेंट या डेवलपमेंट होता है, आपको उसको कई नजरियों से देख सकते हैं. तो यहां नेपाल में एक नजरिया था या कई नजरिए थे नेपाल में, और भारत का एक नजरिया था. सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ नेपाल what is India's policy and why we followed a certain policy. I think that was the main purpose of this book. And we can, if you wish, we can discuss some of the major incidents, including the then Foreign Secretary's visit. But, that was the idea. एम्बेसडर एउटा कुरो के भने यहाँ नेपालमा अहिले पनि चर्चा के हुन्छ भने माओवादीका नेताहरूलाई इन्डियाले संरक्षण दिएर प्रमोट गरेको, तिनीहरूलाई सबै भारतमा राखेको थियो भन्ने चाहिँ कतिपय पुस्तकहरू लेखहरूमा अहिले पनि चर्चा परिचर्चा हुन्छ. तर तपाईको पुस्तक पढ्दाखेरि इन्डियाले जुन किसिमले नेपालको माओइस्टहरूले इन्डियाको माओइस्टहरूसँग लिङ्केज इस्टाब्लिस गरेर भारतले उनीहरूले चाहिँ खत्मै पार्न खोजेको थियो. व्हाट एक्चुअली इट्स अ भेरी बिग क्वेश्चन स्टिल इन द नेपाली सोसाइटी. सो इंडिया की जो पॉलिसी थी माओइस्ट के प्रति, वो चेंज हुई over a period of time. It was not a static policy. It changed because the circumstances in Nepal changed. तो भारत का जो, और ये किसी भाजपा या कांग्रेस सरकार की पॉलिसी नहीं, ये भारत की पॉलिसी थी कि हम लोग नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करते हैं. ये एक हमारा ट्विन पिलर मंत्र था कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं बहुत जरूरी हैं नेपाल में स्टेबिलिटी के लिए, और ये फोर्सेस अगर यूनाइटेड होंगे तभी ये जो माओइस्ट इंसर्जेंसी का चैलेंज है वो टैकल हो सकेगा. इफ दीज फोर्सेस आर नॉट यूनाइटेड देन इट विल बी अ बेनिफिट टू द माओइस्ट्स. सो दिस वाज आवर स्ट्रेटजी. एंड सेकेंडली, यू रिमेंबर 2001 में वो 9/11 का एपिसोड हुआ न्यूयॉर्क में. हमारे यहाँ कुछ सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि द बिगेस्ट थ्रेट इंडिया इज फेसिंग इज द नक्सल थ्रेट.
हमारे यहाँ जो माओइस्ट को उनको नक्सलवादी कहते हैं, they were the insurgents in India. So our approach was that the Maoists will create havoc if they assume power in Nepal. They will give shelter to the Indian Maoists, and that will be a huge security threat to India. So our approach was that politically, if the monarchy and the political parties are united in Nepal, and militarily, if the Nepalese army can crush the Maoists, that is the ideal situation. And that was our policy for many years. This policy changed only in 2005. In 2005 February, जब आपके ex king ज्ञानेंद्र शाह जी ने executive power अपने हाथ में ली, उसके बाद से ये policy change हुई. So our policy changed because then there was a feeling, I don't know, I can't speak for the Nepalese authorities of the time, but perhaps there was a feeling here that the strong monarchy, executive monarchy, can handle both political parties and the Maoists simultaneously. So what happened as a result of this is that the political parties and the Maoists got together, and they felt that they have a threat from the monarchy. The monarchy is trying to eliminate both of them. So these two forces got together. और इंडिया का पॉलिसी जो था, हम लोगों ने बड़ा क्लियरली कहा था कि एक बैलेंस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि हमें याद है पंचायत काल के बाद जन आंदोलन जब हुआ था, किस तरह एग्जीक्यूटिव मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी नेपाल में. सो दैट बैलेंस नीडेड टू बी मेंटेन. जब वो बैलेंस बिगड़ा, तब ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में द अदर टू फोर्सेस गॉट टुगेदर, एंड देन वी नो द हिस्ट्री आफ्टर दैट. विषय में अब थोड़ा दूसरे अर्कोतिर उहाँको किताबकै अर्को पाटो छ कि उहाँले सब नेशनल अर्थात् प्रोभिन्सहरूले प्रोभिन्ससँग सम्बन्धहरू अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बङ्गाल र हाम्रो मध्य प्रदेश, प्रोभिन्स नम्बर 1, प्रोभिन्स के अरे लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूले त्यो प्रदेशहरूसँग सम्बन्ध बनायो भने सायद धेरै समस्याहरू समाधान हुन सक्ने, इकोनोमिक टाइज, ट्रेड, इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि योगदान हुन सक्छ. अब यो हाम्रो संविधानमा जुन व्यवस्था छ, विच म पनि आफै पनि यसको वकालत गरिरहेको छु, हाम्रो संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसभित्रमा यो सबै विषय केन्द्र सरकारको रहेको छ. तपाईको संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था छ, भारतको संविधानमा. तर मैले यसो भारतमा अहिले हेर्दाखेरि के देखिरहेको छु भने वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी र अरू पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले सिधै सिधै प्रान्तहरूसँग, भारतका राज्यहरूसँग डिल गरेको देखिन्छ र चिफ मिनिस्टरहरूले आफैले पनि विभिन्न मुलुकहरूमा गएर मार्केटिङ गरेर इन्डस्ट्रिजहरूलाई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भाइट गरिरहेको देखिन्छ. अब यसलाई कसरी, कुन फ्रेमवर्क, तपाईँले नयाँ फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभएको छ. What kind? We have a lot of framework and protocol between Nepal and India, a huge, and in different sectors. So what is in your mind that how can these provinces and your states can collaborate each other in economic, trade and development? तो इस पे मैं दो चीजें कहना चाहूंगा. एक तो इंडिया में क्या हुआ, हर स्टेट्स जो है इंडिया में is competing with the other states to get industries, to get foreign direct investment. तो इससे क्या एक अच्छा हो रहा है कि हर स्टेट चाह रहा है कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ताकि इन्वेस्टमेंट आए. So this competition, I think, is a positive development because states are saying we have to be better than the other one so that we get a lot of foreign investment. और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो some of the states like गुजरात और महाराष्ट्र या the southern states जो हैं हमारे, उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है. कुछ बाकी जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा कम आ रहा है. तो एक थोड़ा सा ये प्रेशर बनता है कि they are competing with each other, that we have to improve our infrastructure, our policies to attract foreign investors. So that's a positive thing. Secondly, you see, भारत और नेपाल का संबंध जो है वो केवल काठमांडू और दिल्ली का संबंध नहीं है. काठमांडू और दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है संबंध का, बट फंडामेंटली नेपाल के लिए जो डेली बेसिस पे नेपाल के लोग जिससे डील करते हैं वो हमारे स्टेट्स हैं. चाहे सिक्किम है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका ट्रेड है,
या लोग जाते हैं काम करने या वहां से लोग आते हैं यहाँ काम करने. सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स बॉर्डर पे होती हैं, दोज आर डेली प्रॉब्लम्स. जैसे लोग कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्सेस हैं या बॉर्डर पे जो पुलिस है, काफी दिक्कतें आती हैं. तो इन दिक्कतों को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ये केवल दिल्ली और काठमांडू के बीच में तो सॉल्व होगा नहीं. तो जो लोग इन स्टेट्स में हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं, यू हैव टू इन्वॉल्व देम. How will you solve the problems that you face along the border unless you involve the states? तो मैं तो समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि आपके जो प्रांत हैं और हमारे प्रांत हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली एंगेजमेंट होना चाहिए. तो हम लोगों ने एक क्रॉस बॉर्डर समिट शुरू किए थे. तो हम लोग प्रोग्राम करते नेपालगंज या जनकपुर या बीरगंज, जहां हम अपने ऑफिशियल्स को इंडिया की तरफ से बुलाते, आपके ऑफिशियल्स आते, मीडिया आता, पार्लियामेंटेरियंस आते, एंड देयर वुड बी एन ओपन डिस्कशन कि भाई हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा होता है, इसका समाधान क्या है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. मैंने तो यहां तक कहा है, मैं हंगरी में एम्बेसडर था, तो मैंने देखा हंगरी और ऑस्ट्रिया का कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं वो बॉर्डर पे होती थी. So the Hungarian cabinet used to come, Australian cabinet used to come on the border and discuss issues and resolve them. तो मैं समझता हूं कि जो हमारे बॉर्डर प्रोविंसेस हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स मिल सकते हैं. काफी दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स शायद सेंट्रल लेवल पे सॉल्व होंगी, बट देयर विल बी मेनी इश्यूज जो स्टेट लेवल पे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे हैं. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, और मैंने अपनी पुस्तक में भी ये लिखा है, कि वी शुड एनकरेज मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड अदर्स ऑफ आवर बॉर्डर स्टेट्स. जैसे उत्तराखंड और जो आपका वो प्रोविंस है सुदूर पश्चिम का, it's good if the chief ministers meet, if the say cabinet ministers meet, if other agencies meet, because there are a lot of issues that will be resolved at that level. I'm not saying कि आप central government को अलग रखेंगे. Central government embassies obviously have to be involved, but we must encourage direct interaction at the provincial level. अमित साहब, मैं देखता रहता हूं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में एफडीआई के लिए एक समिट होता रहता है. जैसे 3 साल पहले मैंने उत्तर प्रदेश में देखा था, जिसमें 4 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. उसी तरह बिहार में, उत्तरांचल, उत्तराखंड में और वेस्ट बंगाल में भी होता रहता है. तो आपको लगता है कि ये इस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है, तो इसको नेपाली स्टेट्स जो है, नेपाल के जो प्रोविंसेस हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाउ कैन दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम? सो आई फ्रैंकली, मुझे तो लगता है कि हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क या एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां पे जो पॉजिटिव ग्रोथ इंपल्सेस हैं, चाहे इंडिया में है चाहे नेपाल में है, दे बेनिफिट बोथ आवर कंट्रीज. सो यू कैन सी दिस हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी. हाइड्रो पावर सेक्टर में एक्चुअली आई वाज कमिंग टू यू. ओके, प्लीज गो अहेड. बहुत प्रोग्रेस हो रहा है. तो हमारी दोनों सरकारों की ये स्ट्रैटेजी है कि एक फ्रेमवर्क पहले बनाया जाए. लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, double taxation avoidance, other treaties we have. Now infrastructure exists, connectivity projects हैं. अब आपकी हमारी रेल शुरू हो गई जयनगर to जनकपुर, and we have integrated checkposts. 2 of them are functional, 2 more will be established. We have good road connectivity now. Oil pipeline has been established, a gas pipeline will be established. We are talking about a railway connectivity between Birganj and Kathmandu. So a lot of developments are taking place. So basically, the infrastructure is now getting ready, or it's almost ready. So I think for the business community now, it'll be much easier. अभी जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट has been opened for Nepal. मैं समझता हूँ कि जो भी पोर्ट नेपाल यूज करना चाहे इंडिया में should be provided, because that will, you know, strengthen the connectivity between India and Nepal, benefit both India and Nepal. So energy, if you have a separate question, you know, I'll come to that. Yeah. So I think we already have the basic framework where the two countries can benefit. Legal framework है, connectivity framework है. आगे काम हमें और काफी करने हैं. But यहाँ पे अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, वो लोग बता पाएंगे कि किस तरह ये चेक पोस्ट वगैरह जो हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, how they are facilitating, and logistics costs of trade are reducing. So I think everybody will benefit.
मलाई एउटा कुरो के भन्न मन लागिरहेको छ, म भर्खर अलिक दिन अगाडि यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा हाम्रो प्राइभेट प्रोड्युसरहरूसँग एउटा मिटिङमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू बडा इन्करेज हुनुहुन्छ, जुन अहिले नेपालबाट विद्युत भारत गइरहेको छ र अहिले बङ्गलादेशले पनि हामीसँग किन्न खोजेको छ। भर्खरै बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भारत आउँदाखेरि उहाँले यो कुरो प्राइम मिनिस्टर मोदीसँग पनि गर्नुभयो। यो क्रममा म के देखिरहेको छु भने यसले एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी नेपाल र भारतको बिचमा, तर पनि कतिपय हार्डल्सहरू छन्। what prospects you are looking at this power generation and then transmission as well as export? So I am very optimistic. I think this is really the bright spot in the relationship between India and Nepal, this energy cooperation and energy trade. Or if you look at our sub-region, I'm talking about Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. Nepal के साथ India buys power, India sells power to Nepal. Bhutan के साथ India buys power from Bhutan. Bangladesh, India sells power to Bangladesh. Transmission lines are in place already. So you already have the skeleton for a sub-regional market in energy. और मैं समझता हूं कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का एनर्जी ट्रेड होगा तो वो भारत के लिए भी फायदेमंद है. एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड एनकरेज. You know, हमारी policies भी change हुई हैं. Nothing is static. So initially in the old days, the thinking was, no, we should deal bilaterally. But if our vision is to have a common integrated economic space where every country can, exploit its full potential, then that is going to benefit all the countries in the region. अब नेपाल से पार अगर बांग्लादेश भेजोगे तो जाएगी तो इंडिया के थ्रू, तो इंडिया को भी फायदा होगा, व्हीलिंग चार्जेस मिलेंगे. So I am all for this, connectivity and a sub-regional energy market, and I'm very optimistic. अभी आपके 4 महीने में, I think Nepal has exported a lot of energy, and India is now facilitating export of Nepalese energy on the spot market, where you get, peaking power rates which are higher. There are long-term, there are PPAs also, but spot market. और जब ये अरुण 3 और GMR और Veseti की बात हो रही है, and Pancheshwar, if and when these projects fructify, can you imagine how it will transform the economy of Nepal? I think estimated projects जो अभी हो रहे हैं, it's about 2,000, 1,200, 6,000-7,000 megawatts of projects are either being processed or under discussion between the two countries. 6,000-7,000 megawatts means an investment of more than $7 billion. I mean, can you imagine? This investment is going to come into Nepal. So Nepal actually has to prepare how to absorb this investment. It's not so easy. So I am very bullish on this energy cooperation, and not only bilaterally, but at a sub-regional basis. थैंक यू एम्बेसडर. आपने अपनी किताबों में एक बात कही है कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें रीइमेजिन और न्यू फंडामेंटल्स खोजना चाहिए, क्योंकि आपका कहना है कि जो पुराने हमारे फंडामेंटल्स हैं, जैसे रोटी बेटी का रिलेशन हुआ, सिविलाइजेशनल, दैट इज नॉट मच मोर एनफ, as you said, and we have to find out the new aspects of the relations between Nepal and India, and the new generation like youths in India and as well as in Nepal, new breed of politician in India as well as in Nepal. So what is in your mind that how can we reimagine this relationship? देखिए, जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, जो हमारे रोटी बेटी का बहुत अहम फंडामेंटल संबंध हैं, they determine the relationship between the two countries. But both India and Nepal are changing. I mean, the young people in both countries, there are new aspirations. वो देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, तो डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस भी बढ़ रहे हैं. तो जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं बहुत अहम है, उसकी इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं कर सकते. बट हमें और मेहनत करनी पड़ेगी कि आज के परिवेश में, आज की दुनिया में किस तरह हम अपने संबंधों को बढ़ाएं. और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे आर्थिक संबंध हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकती है. आर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैन बिकम द anchor of this relationship as we go forward, and I think hydropower cooperation is a very critical anchor, so which is why I'm very bullish. And secondly,
you know, our two countries are young countries. Other countries in Europe and other places are aging countries. हमारे यहाँ youth है, और youth जो है, मुझे जो लगता है कि हमारे youth में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी जैसे पहले थी. चाहे हमारे यूथ लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे बीपी कोइराला के जमाने, बीपी कोइराला एंड जेपी एंड राम मनोहर लोहिया, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी डोंट हैव टुडे. So it's very important that we work on this relationship, because we are neighbors, we will always be neighbors, so we must know each other, understand each other better. And that was the other reason I wrote this book, that despite the fact we are so close, in India for instance, there is not enough awareness about Nepal. What is happening in Nepal? What are the aspirations of the Nepali people? What is the relationship? What are the problems in Nepal? तो इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, एक एक कैरिकेचर माइंड में है नेपाल के बारे में, बट no deeper understanding. And so one of the reasons of the book was also to educate the Indian people about Nepal, the diversity of Nepal, what is happening in Nepal. तो ये एक और मेरा मकसद था किताब लिखने में. तो मैं तो समझ, जैसे आपने कहा कि ये तो बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लस ब्रिंगिंग द यूथ ऑफ आवर टू कंट्रीज टुगेदर. हमेशा आपने एक चैप्टर ही नेपाल चाइना पर रखा हुआ है, and which is always a talk of town in Nepal and as well as in Delhi. Whenever there is anything happen in Nepal, the Indian media covered that Nepal China के ओर चला गया. Many things it's come up, and some of the things are. तो आपका एक जो चैप्टर था जो मैं पढ़ रहा था, तो मैं इसको आपके चैप्टर के साथ में एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि लास्ट 1 डिकेड से हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस रीजन का जियोपॉलिटिक्स चेंजिंग है. चाइना आफ्टर 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट शी is coming as a very giant, very active in the global politics. India also growing and trying to play in the global politics, joining many new global framework. In this context, what we feel at the moment, कि हमारा जब यहाँ पर कुछ भी हो तो हमारा पॉलिसी 60s से ही रहा है, थोड़ा इंडिया से कुछ हो जाए तो हम चाइना की ओर चले जाते हैं, चाइना की ओर कुछ हो तो हम इंडिया की ओर चले जाते हैं. ये हमारा रहा है, इसमें देयर इज नो, एंड समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स इट कुडंट. So in between, what we did in 16, we signed a transit treaty with China, which is a very fanfare. Our president was there, and everything we have signed. But after 6-7 years of this treaty, we are not able to bring one container of things from third countries through China. And even we are sometimes facing the border closure by the Chinese friends. And even the normal trade is also sometimes difficult. So what we found that understanding this, there are a lot of reasons given by the Chinese authority, the COVID and many things, and there are security reasons at Tatopani also. So what we found that the Nepal is a big dilemma at the moment. In global politics, we have a bilateral relation with India as well as with the USA and many countries. But now what we found that in our bilateral relations, China is trying to be an active role in containing some Western countries and other countries. It is very obvious in international politics that the country is trying to replace each other. That is there. But it's trying to be a part of the bilateral mechanism is a very difficult question at the moment in Nepal. We have seen during the MCC ratification, we have seen at the issues of the SPP. So how you see as an Indian diplomat, how you see all this development, the geopolitical dilemma of the moment of Nepal? See, I feel that our world is in a flux. बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं. आप देखिए जैसे कोविड का पैंडेमिक हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुड नॉट डू एनीथिंग टुगेदर. All the vaccines were, cornered by some of the rich countries. अफ्रीका में वैक्सीन्स नहीं पहुंची. दूसरी तरफ जैसे आपने कहा यूएस और चाइना का, there is a huge contestation for influence globally. US and China are really competing. Then you have this Ukraine conflict between Russia and Ukraine, as a result of which
Russia has drawn much closer to China, and there is the Western countries are on one side is had a huge impact in terms of food, fertilizer prices, oil prices. तीसरा आप देखें इंडिया चाइना relations are also very delicate, after the Chinese intrusion in Ladakh, so things are not looking good. And आपने जिक्र किया कि MCC का जो debate हुआ नेपाल में, you could see between US and China there was this big debate in they were each influencing decision making here. So the world is in a huge flux. And everything is unstable. जो एक equilibrium अभी तक था global system का, वो that has got shaken, and a new equilibrium has not yet emerged. So there are opportunities and challenges. One is, how do you manage this? How do you manage, for instance, US-China confrontation in Nepal? But the other aspect also is that every challenge is also an opportunity. You might be able to benefit from it also if you have a nuanced diplomacy. So I think this is, every country has to find some way of dealing with this situation, keeping their own interests in mind. So it's a very difficult situation, and you have to work very, very hard. I mean, everybody says, India has, as you said, joined some of these Quad and so on, Indo-Pacific strategy. But that has not prevented India from abstaining on many resolutions relating to the Russian-Ukraine conflict. We have abstained. We have not condemned. I mean, we say there should be a peaceful negotiation and negotiated settlement to this conflict. So every country really has to see what is in their best interest, and that is the way to proceed. For a small country, sometimes it becomes difficult because the influence of a very large country, becomes dominant. And I've seen some of the debates on MCC in Nepal, all kinds of things. Army aa jayegi, this is joining the Western military camp and so on. So it's a tough job, but the point is every country has to manage this and see how they can, they are not adversely affected by it, and they actually benefit from this situation. I don't know if I've answered your question, but it's a very difficult. एक बात एउटा कुरो म भन्न के चाहेको भने कि भारत र चीनको बीचमा समस्या आउँदा हामीलाई समस्या हुन्थ्यो, पहिले पनि अहिले पनि हुन्छ। विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो युएन भोटिङदेखि लिएर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूमा पनि हामीलाई समस्या हुन्छ। तर अब यहाँ प्रश्न के आयो भने हाम्रो अर्को छिमेकी मित्रको अमेरिकासँग ठुलो समस्या हुने भयो र डिफ्रेन्ट इकोनोमिक ट्रेड र जियोपोलिटिक्स, आर्म्स, न्युक्लियर सबै क्षेत्रमा कम्पिटिसन देखिया छ, त्यो हाम्रो इमिडिएट नेबरमा। अब यहाँ हामी के भयो भने नेपाल जस्तो सानो मुलुक जसलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अर्थात् हामीले आफ्नो कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा इन्टरनेसनल फोरमहरूमा भन्न सक्ने कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुने स्थिति बन्ने गयो, किनभने उहाँहरूको बीचको कम्पिटिसन र तपाईहरुको बीचको कम्पिटिसनले हामी जस्तो सानो मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति बन्ने देखिन्छ जहिले बेला पनि। अब त्यसले गर्दाखेरि भर्खरै अहिले ताइवानमा अमेरिकाको स्पिकर आउनुभयो, and Chinese government, Chinese ambassadors, and even the foreign minister tried to convince Nepal to speak on it. But we keep silent. We didn't speak because we didn't speak earlier also on Taiwan. And we never speak on all these, the conflicting issues between US and China, even with the British and China, we never spoke. I'm talking about the modern history of Nepal. Then what today is that what we feel it at the Kathmandu, that our government sometimes in a very tight rope, and to speak or not to speak, to go north or to south or west. So as a diplomat, what is your, if you could have been, what is your option? Can you suggest? So, I can answer simply to say that Nepal should do what is in the best interest of Nepal. Yeah, national interest. Yes. That's a good word. Mr. There are केही नयाँ डेभलपमेन्टहरु तपाईकै किताबमा छ, सब रिजनल
ग्रुपिङहरू बी मिस्टेकको कुरा गर्नुभयो बीबीआईएन अब म बीबीआईएनले त बीआईएन भनौँ कि जस्तो लाग्छ बङ्गलादेश इन्डिया र नेपाल भन्दा राम्रो होला किनभने भुटान इज very reluctant to join the BBIN. There are a lot of reasons for Bhutan itself, and that is a good example of national interest itself. That's in this context. What I found that the BBIN and B mistake, there are the alternative which the SARC is not functional. Since the issues of India and Pakistan, if they couldn't solve the border and many issues, I don't think the SARC will proceed further. So in this context, there are two. One is a region, sub-region in Nepal, I mean the South Asia. Another is a Southeast Asia and South Asia both. So what prospects you see that the Nepal can, or the Nepal along with India and other countries in B mistake and BBIN, can they replace the SARC, or till the SARC functional, they will be working and it will create a more regional vibrance? So I don't necessarily want to go into different institutions. I would rather say that regional cooperation is essential. That our region cannot develop rapidly by each country doing everything by itself. So regional cooperation is critical. अब सार्क अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर BBIN पे फोकस करना चाहिए, BIMSTEC पे फोकस करना चाहिए, या some other arrangement should be made. So for me, what is important is that this regional cooperation must function. So I'm not that bothered about A institution or B institution, but I feel that the concept of regional cooperation is critical because no country can develop by itself. If India में अगर problems होंगी तो हमारे सब neighboring countries में दिक्कतें आएंगी. If our neighborhood is unstable, insecure, volatile, it will affect India's prospects. So I think the countries of our region have to pull together, grow together. That's very important. And I'm very happy to see that, during the COVID pandemic and during all these very difficult situations, our countries are coming together. Look at the two back-to-back visits. Prime Minister Deuba went to India in April. Prime Minister Modi came to Lumbini in May, within 1 month. And these were not just symbolic visits, but very major developments took place. We signed a vision statement on energy cooperation, which allows for sub-regional cooperation in energy. So I think the region has to pull together. चाहे वो सार्क में हो, अगर सार्क में नहीं है तो किसी और फॉर्म में हो, but बहुत जरूरी. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे फॉर्मर ट्रेड सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चंद्र घिमरे जी. मैं एक बात मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने यो सार्क र यो बीबीआईएन जुन कन्ट्रीहरू छन् बी मिस्टेक, यिनीहरूको आफ्नै भित्र पनि ट्रेड आफैले एकअर्कासँग गर्ने ट्रेडको मात्रा धेरै कम छ. बट दे आर डुइङ ट्रेड विथ द अदर कन्ट्रिज इज ह्युज. इन्डिया आफैले अरूसँग धेरै गरिरह्यो. हाम्रो र इन्डियाको बिचमा छ, धेरै छ हाम्रो. तर अरू कन्ट्रिजहरूको बिचमा नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अरू देशहरूको बिचमा, त्यसै गरी म्यानमार या थाइल्यान्ड, अरू भनौँ न साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूसँग यो किन नहुन सकेको होला? कस्तो के गर्दाखेरि हुन्छ होला? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं था. So there were a lot of problems. Now I think that framework is being created. Secondly, अब जैसे energy है, one issue that always came up when I was here was that there's a huge trade deficit between Nepal and India. Now with energy exports from India, from Nepal to India, I think your trade deficit will be affected. So if you look at overall balance of payments issues, I think it will be much better in the next year and it will only improve thereafter. So I think we have to put in much more effort, to facilitate this sub-regional or regional trade, and that is happening. So I am very optimistic on the economic front. अब यहाँ उपस्थित धेरै देख्छु मेरो गुरु प्रोफेसर लोकराज बराल हुनुहुन्छ, विजय कुमार जी, हाम्रो पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ. यहाँहरू कसैलाई, यहाँ उपस्थित कसैलाई कुनै प्रश्न छ इन्भेस्टरसँग? प्लिज. I know him very well. Can I go over there? Yeah, sure.
In a very brief, you very aptly pointed out there is a big or a huge prospects that lies with Nepal. That's about our potential export of electricity to India. That's very, very important part. Regarding the same, what we have seen from our side, there are certain guidelines, there are certain legal arrangements that is on the side of India. They are deterring the certain part of our potential export to India. That is just in the name of investment. Who has invested the money in that project, in that generation project? So, having said, given this context, I would like to know how we can sort it out at the earliest so that that potential prospects we can harness in a huge manner. Thank you so much. That's a very good question. So I would just like to say that we have begun this process. The process is not perfect. Over a period of time, I think there will be changes, there will be improvements, there will be amendments, but at least we have begun the process and we are seeing the benefits. So it's not that everything is happening within this. I know on the Nepalese side, earlier also there were some difficulties, in terms of ownership, etc. But this process has begun. That's point number one. And point number two, you cannot divorce this economic cooperation from the politics of the day. So, the geopolitics of the day or the bilateral politics of the day. So this is, in a sense, also linked to that. So it's a question of looking at a glass half full or half empty. I would prefer to look at it as a glass half full. And I hope very much that it will become fuller and fuller as the years go by. नमस्कार, म धीरेन अनुपम सुर्खेतबाट नेपालीबाट राख्दा हुन्छ कि हिन्दीबाट गरौँ? मेरो घर चाहिँ सुर्खेत वीरेन्द्रनगर, म कर्णाली प्रदेशबाट बिलोङ गर्छु। रञ्जित सरका धेरै कुराहरू सुन्दर लाग्दै पनि केही कुराहरू मलाई फिक्का लागिरहेछन्। के त भन्दा एउटा कुरा जीएमआर को जो एउटा त्यो चाहिँ हाइड्रो गरेर हामी दुईटा देशले उपलब्धि गर्छौं हाइड्रो पावर सञ्चालन गरेर भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भयो। जीएमआर ले त्यहाँ चाहिँ मेरै गाविसमा पर्छ त्यो जीएमआर को ले अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर परियोजना। तर त्यो परियोजना उले म्याथमा त थाम्ने गरेको छ, काम सञ्चालनमा त आउँदै आउँदैन। हामीलाई विश्वास पनि छैन कर्णाली प्रदेशवासीलाई उले त्यो जीएमआर ले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छैन र त्यो योजना लैजाल्नु पर्छ। हामीले हाम्रो मान्यता त्यो छ कर्णाली प्रदेशवासीको। एउटा कुरा। अर्को कुरा, यति सुन्दर कार्यक्रम म त बाहिर नगएर यहाँ बसेर एकदमै म गर्व गर्छु राम्रैसँग। अनि अर्को कुरा, सीमा विवादको बारेमा हामीहरू अहिले रञ्जित सर त त्यो भारत सरकारको हुकुमतसँग पनि डाइरेक्ट टच हुनुहुन्छ, यो सल्टाउनु पर्यो हैन? जे होस् त्यो उहाँसँग जान सक्छ नि हैन? त्यो कुरा त उहाँको त त्यो त्यहाँसम्म जाने अवस्था हो के, त्यहाँसम्म राख्न सक्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई अब यो एउटा फेस्टिभल मार्फत पनि म चाहिँ यो कुरामा जान्न पर्छ र कसको सीमा भारतले हाम्रो मिचेको छ भने हामी दावा गरिरहेछौँ र त्यो बारेमा पनि केही बहस होस् भन्ने लागेको छ मलाई। यो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर आप जीएमआर का प्रोजेक्ट 900 मेगावाट्स का है तो इसमें $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इट मे बी इवन मोर। और इसका जो लैग बहुत होता है, आपको पैसे अभी इन्वेस्ट करने हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा 10 साल के बाद। तो इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए आपको ऋण लेना पड़ता है बैंक से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। बैंक्स आपको लोन तभी देंगे जब उनको लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा तो आप लोन को रिपे कर पाओगे। अगर उनको लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो लोन नहीं देंगे। अब प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको एक अग्रीमेंट चाहिए कि जो आप पावर बना रहे हो वो कोई खरीदने वाला है और इतने पैसे पे खरीदेगा। तब आपको पता है कि जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। तो अगर वो अग्रीमेंट नहीं है
तो कोई बैंक आपको पैसा नहीं देगा। तो जीएमआर को ये मेजर प्रॉब्लम ये थी, वो बांग्लादेश को पावर बेचना चाहते थे क्योंकि बांग्लादेश उनको ज्यादा दाम दे रहा था और डॉलर में दे रहा था। तो कई साल पहले भारत सरकार की नीति थी कि नहीं, आप पहले हमें बेचो और हम बांग्लादेश को बेचेंगे। तो ये इस नीति को अब ये परिवर्तित हो गई है। अब जो हमारा विजन स्टेटमेंट है उसमें जीएमआर डायरेक्टली बांग्लादेश को बेच सकता है एंड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया, और जो उसका चार्ज होगा कि जो पावर हमारे यहां से जा रही है वो ट्रांसमिशन लाइन ओनर को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स थी पावर परचेज अग्रीमेंट साइन होने में, ये अब काफी रिजॉल्व हो गई हैं। और दूसरी चीज ये थी कि जीएमआर जो था वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर, जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढ रहा था, और उसमें शायद इतना इजी नहीं था, बट अब भी मैंने न्यूज़पेपर में देखा शायद कोई कंपनी आई है फ्रांस से या क्या है। तो आई डोंट स्पीक फॉर जीएमआर, बट आई नो देयर वर सम प्रॉब्लम्स, और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में होती हैं। आप वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को देखिए, कब 20-25 साल तो ये स्नोई माउंटेन ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसमें लगी रही, उसके बाद ये चाइनीज थ्री गॉर्जेस, कितने साल, 30-35 साल हो गए। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट इजी, एंड स्पेशली इन दिस हिमालयन टेरेन. So I hope very much that these problems are being resolved and the project will come on stream. सीमा विवाद का जहां तक इशू है, मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में इसमें काफी अध्ययन किया था, पुरानी किताबें पढ़ी थी, अंग्रेजों की थिंकिंग थी। तो ये बहुत अब कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि आपके पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना दिया है। तो अब जो अगर भारत और नेपाल के बीच में इस पे वार्ता होगी, तो कोई हमें गारंटी नहीं है कि उस वार्ता का जो सल्यूशन निकलेगा वो आपकी पार्लियामेंट को मंजूर होगा कि नहीं। जैसे इंडिया में हमें पार्लियामेंट का नहीं चाहिए, इस तरह का 2/3 अप्रूवल नहीं चाहिए बाउंड्री, आपके यहाँ तो चाहिए। तो आपका डेलीगेशन इंडिया जाएगा, वो कहेगा अच्छा हम इसको मानते हैं, पर वो जब आपकी पार्लियामेंट में जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑपोजिशन भी है, तो हम लोगों को पता नहीं कि वो मान्य होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे दिमाग में कि बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ये तो हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम केवल बातचीत से ही सॉल्व हो सकती है और कोई सोल्यूशन नहीं है, पर किस बेसिस पे हम बातचीत करें ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली होगा इस पे बातचीत, बट दोनों देशों को, फॉरेन सेक्रेटरीज को मिल बैठ के देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। त्यसरी नगरौँ प्लिज। एम्बेसडर भीम उदास, एकदम सर्ट एन्ड दिस इज लास्ट क्वेश्चन प्लिज। धन्यवाद। यहाँले एम्बेसडर रञ्जित रेसँग यो रिजनल इस्युजको कुरा उठाउनु भएको थियो, म त्यसैलाई फलोअप गर्ने लागेको छु। यो हाइड्रो इनर्जीमा अब हामी क्लाइमेट चेन्जको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, त्यस कारण यो हाइड्रो पावर धेरै महत्त्वपूर्ण हुने भयो। यो चाहिँ अब बीबीआईएन अन्तर्गत भुटान र नेपाल हामी अपर स्ट्रिममा छौँ, बङ्गलादेश र इन्डिया डाउन स्ट्रिममा छन् भने यो चारवटा मुलुकको चाहिँ अब बीबीआईएन अन्तर्गत नै काम गर्न सक्यो भने चारैवटा मुलुकको निमित्त त्यो फाइदाजनक हुन्थ्यो होला। किनभने बाइल्याटरल मात्र हुँदाखेरि, इन्डिया र नेपालको मात्रै हुँदाखेरि कहिले कहिले इस्युजहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ। तर रिजनल बेसिसमा गयो या सब रिजनल बेसिसमा गयो भने अब बिमस्टेकको पनि छ, बिमस्टेकै अन्तर्गत फ्रेमवर्कमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चारवटा कन्ट्रीको बिचमा चाहिँ इनर्जी जुन क्राइसिस छ, इनर्जी जुन अब पोटेन्सियल छ, त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्न सक्यो भने चारैवटा मुलुकको निम्ति राम्रो हुन्थ्यो होला। र यही कनेक्टिभिटीकै सम्बन्धमा बिमस्टेक अन्तर्गत त्यो एउटा फ्रेमवर्क नै छ। अब इन्डिया र म्यानमारको बिचमा यो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसनको क्रस बोर्डर एरेन्जमेन्टको एग्रिमेन्ट भएको थियो जुन 18 जब सुषमा स्वराज उहाँ म्यानमार जानुभएको बेला। नेपाललाई अर्को एउटा डाइरेक्ट एक्सेस के हुन्थ्यो भने थाइल्यान्ड, म्यानमार,
इन्डिया नेपाल अब हाम्रो चारवटा मुलुकमा चाहिँ त्यो गुड्सहरूको ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो हुन सक्थ्यो होला, यो भोलि नहोला, तर अब केही कालान्तरमा यदि त्यो गर्न सक्यो भने अहिले जुन 3 हप्तामा 4 हप्तामा आउने सामानहरू हो त्यो चाहिँ अब एकै हप्तामा आउन सक्थ्यो। थाइल्यान्डदेखि नेपालसम्म एकै हप्तामा बाई रोड आउन सक्थ्यो। त्यो पोसिबल, त्यो सम्भावना छ कि छैन? नहीं, बिल्कुल संभावना है और मैं तो बिल्कुल ये सपोर्ट करता हूँ। एनर्जी में भी चारों कंट्रीज के बीच में एनर्जी आदान प्रदान होगा तो चारों के लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट आई फील दैट द एनर्जी सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द 4 countries should meet and sort out all the nuts and bolts. You know, the vision statement is already there, and the other 2 countries should also be accommodated in that vision statement, and the energy secretaries should meet to sort out, you know, how to implement this. And certainly when the road infrastructure between India and Myanmar is created, when the trilateral highway between India, Myanmar and Thailand is completed, it will benefit Nepal. There's no doubt. It will benefit Bhutan. It will benefit Nepal in the context of BIMSTEC. It will reduce your logistics costs. So absolutely, you know, I think it will not only benefit India and especially our northeastern states, but it will benefit Nepal and Bhutan equally. धन्यवाद एम्बेसडर साहब। एउटा कुरो तपाईहरुलाई लाग्ला कि अब समय समाप्त हुँदै गएको हुनाले म अरु क्वेशन लिन सक्दिन होला। यहाँहरुलाई लाग्यो होला किताबमा एउटा च्याप्टरै छ कालापानी विवादको बारेमा, उसको बारेमा एउटा च्याप्टरै छ। मैले किन प्रश्न सोधिन जस्तो लाग्यो, तर यति क्लिष्ट कुराहरु छन्, उहाँलाई दिनभरि सोध्न लाग्यो भने 2-3 घण्टा लाग्छ त्यसको जवाफ दिनलाई। तर एउटा कुरो भन्छु, मेरो गुरु हुनुहुन्छ यहाँ, हामी चाहिँ जुन बेला नेपालको पार्लियामेन्टले नक्सा पास गर्दै थियो त्यो बेलामा हामीले चिने जानेको सबै नेताहरूले यो काम नगर्दिनुस्, यो गलत हुन्छ, यो नेपालको हितमा हुँदैन, किनभने भोलि नेगोसिएसन हाम्रो नेगोसिएटरहरूले गर्न सक्दैनन्। अब हामी के नेगोसिएसन गर्ने त? अब त हाम्रो संविधानमा लेखिसकेको छ। अब हामीले भनेर भारत जान्छ त्यहाँबाट, अनि केही गरी नेगोसिएसन र डकुमेन्टको एक्सचेन्ज भयो भने त्यसमा 5 किलोमिटर तल र माथि भयो भने हाम्रो पार्लियामेन्टले मानिदिन्छ, राजदूतले त्यही कुरा भन्नु। हामीले भन्यौ मानेन, हाम्रो कुरो कसैले सुनेन। हाम्रो एउटा अर्को उहाँले राष्ट्रवादको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ। हाम्रो राष्ट्रवाद आफैमा ठुलो समस्या भइसकेको छ। र तपाईको त्यही म जीएमआर को कुरा गर्छु। म जीएमआर को जीएमलाई एकचोटि यही भेटेको थिएँ। उसको गाडीमा आगो लगाइदिया, तपाईलाई थाहा होला नि, उसको गाडीमा आगो लगाइदिया थियो, उसको अफिस जलाइदिया थियो 2 चोटि। अब यसमा कसरी नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउँछ इन्भेस्टर? त्यो पनि हामी आफैले सोच्ने कुरो हो कि हाम्रो देशको हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भने हामी आफैले हाम्रो बीचमा छलफल गर्दैनौँ। हामी कहिलेकाहीँ एकदमै उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, त्यो हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन। भारतको यत्रो विशाल देश, लोकतान्त्रिक देशले यस्ता नक्साको कुराहरू सबै कुराहरू आफ्नो संविधानमा किन राख्यो होला? झन्डै 26-27 वर्ष लगाएर भारत र बङ्गलादेशको बीचमा बोर्डर नेगोसिएसन भयो, which is in favor of Bangladesh, and it is in highly favor of Bangladesh. तो बंगलादेश को फेवर में थियो। तो कन्भिन्स गराउन भारतलाई पश्चिम बंगालदेखि लिएर सेन्टर स्टार्टेड विथ द लङ टाइम इन्दिरा गान्धी टाइम एन्ड टिल डेट मनमोहन सिंह almost signed a treaty, but Mamata Banerjee refused to abide by that one. तर अब यो धेरै ठुलो कुरा हामी के गर्यौं भने हाम्रा यी सबै मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हामी कूटनीति रत्न पार्कमा, राजनीति चाहिँ कोठामा गर्ने गरेका छौं। उल्टो हुनुपर्ने सुल्टो हुनुपर्ने चाहिँ उल्टो भइरहेको। त्यसैले हामीले सोच्नुपर्ने, एकचोटि सोचौं हामी आफैले पनि कि वास्तवमा त्यो नक्सा पास गरे त्यो बेलामा त भयंकर काम गर्यो भन्ने लाग्यो। खडक प्रसादजीले त महान काम गरिदिए, मैले त यस्तो गरिदिए अहिले पनि भन्नुहुन्छ। तर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुस् न, त्यसपछि पनि 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, किन नेगोसिएसन हुन सकेन त? यस्तो किन भएन? किनभने अब नेगोसिएसनको ठाउँमै छैन। अब नेगोसिएसनमा बसेर कुरो के गर्ने त? अब त छैन त। हामीले मान्यौं एकछिनलाई हाम्रो फरेन सेक्रेटरी, 2टा फरेन सेक्रेटरीले नेगोसिएट गरेर त्यसमा तलमाथि भयो भने कसले मान्दिन्छ? यो त राष्ट्रघाती तुरुन्त भइहाल्छ। त्यसैले मैले एउटा नेपाल र भारतको विषयमा धेरै स्पेक्ट्सहरु छन्। उहाँले किताबमै सुरु गरे, जति नजिक हुन्छौं त्यति रिलेसनहरुमा तिक्तता र मिठापन दुईटै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध उहाँले सिभिलाइजेसनल पनि छ, रोटी बेटीको पनि छ, ट्रेड पनि छ, इकोनोमी पनि छ, हाम्रो समस्या पनि छन्। मलाई के लाग्छ भने यो बोर्डरको समस्या पनि हाम्रा देशका डिप्लोमेटहरु, पोलिटिशियनहरुले सोच्यो भने समाधान हुने ठाउँहरु छन्। त्यसमा चाहिँ कन्सेन्सस हाम्रो बीचमै हुनुपर्ने जरुरी म देख्छु पर्सनली, हैन? तर हामी अहिले चाहिँ इतिहासको धेरै सारै अप्ठ्यारो मौकामा छौं। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन नयाँ डेभलपमेन्ट भइरहेछ, उहाँको किताबमा नयाँ फाउन्डेसनहरु,
Your book has mentioned that we have to find out the new ways to develop a reimagine our relationship, to find the youth leaders and youth from both the businessmen and new startup. All these people should join together and create a new type of, the environment. With this note, I would like to close this session. Thank you for the organizer. Thank you, Ambassador, for this session. Thank you very much. थ्याङ्क यू सो मच। मैले अघि नै भनेको थिएँ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ सेसन भनेर। कलिङ्ग लिटरेचर फेस्टिभलको यो अद्भुत सेसनमा दुवै सम्माननीय स्पिकरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्छु। हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ यो कन्भर्सेसनबाट, राजनीतिक, सामाजिक, ट्रेड बिचको यो दुवै देशको बन्डिङ। अब भने यहाँ भारतका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ सम्माननीय रूपराज बरालज्यू। उहाँलाई म स्पिकरहरूलाई खादा, टोपी, माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनका लागि मञ्चमा आइदिनका लागि म हार्दिक निम्तो गर्छु। यसपछि भने हामी 15 मिनेटको लागि ब्रेक लिन्छौँ।